Hello, hello. Are we live? अच्छा ठीक है. We are live. So there is no one watching this stream, but I want to still record this stream solving a DSA problem. My name is Aniket Shrivastav, and I'm a software engineer too. I'm just practicing a problem, and I just wanted to go live. That's why I'm solving this DSA problem live. So let's get started. Like it will be in Hindi plus English commentary kind of stuff. So let's see how many people comes and joins the live stream. It's okay if no one joins. If it is good if 1 or 2% minimum joins, or later on I will put this video on YouTube on my channel. If people like to watch, then it is good. Let's see what happens. I want to try this out. Let's share my screen. Okay, my screen is visible. Okay, so timer on कर लेते हैं. Let me start the timer. So our problem is longest substring without repeating characters. Given a string S, find the length of the longest substring without duplicate characters. Okay, so basically we will be giving a string S where we have to find the longest substring without the duplicate characters. Okay, so meaning the A, B, C, D, the alphabet characters from A to Z should not be repeated. So for example, if we try to understand by examples, so here if we see, so what are substrings? Substrings are basically this, then BCA, BCBB. It's like a continuous subsets, right? In the string. So if I see it properly, its answer is 3. Basically, I'm assuming ABC, like no repeated characters, so ABC would be answer. It has not included ABCA because A is a repeated character. Here the answer is 1 because okay, all of the characters are B, and here the answer is 3 because I think WKE, or this can also be a possible scenario, KEW. Okay, so before writing the code, I am going to write this code in C++ and going to explain the intuition behind the problem. Actually, I have solved this problem before also, but I am like looking at this problem after a long months, 6 or 8 months. So even I'm not sure in this live stream even I'm going to solve this problem or not. But I think let's try it out. It is something I always wanted to try out. So what I believe is that since we have a substring, what a brute force approach could be that we could iterate over two loops from I to n, and second loop inside loop which will be from j is equal to I to n. So in this what will happen that we are going to iterate through every substring possible, and we have to keep a check that okay, in this particular substring is there any character which is already included, right, which we can solve using unordered map or a frequency array kind of thing to check whether okay this character existed before or not. If it already existed, and we can cancel that sub array. So this is one thing which I'm thinking, but I think the time complexity for this would be big of n square, where n is the length of string, and again we have to take care of the space part also, so which is again O of 26, or O of, yeah, O of 26. Now I'm thinking, can we optimize this approach to big O of n, because of course this problem should be solved in big O of n because the string length is max to max 5 into 10 power 4. So if we are going with big O of n square, then it would become 5 into 10 power 4 into 5 into 10 power 4, which is 25 into 10 power 8, which will take 25 seconds to run our solution, and we want to run our solution in 1 second, which is 10 power 8. So consists of English letters, digits, symbols, and spaces. Okay, I would better rather take a unordered map of characters which will keep track of this. What we can do is we can maintain two pointers, left pointer and a right pointer, and we could keep try to put in the characters inside our unordered map, right? And we would try to, since we want the longest one, right? So our aim would be that as soon as we are putting the characters, we should be putting the characters unless and until we don't
find any duplicate in an unordered map, right? And now let's suppose if we have put any character, and now let's suppose it feels like that, okay, like this character is a duplicate one. So from the left pointer we have to decrement the characters from the left side. Basically, uh, the substring which we are considering, we have to remove the characters from the left side. So to solve this, we can write the code in this manner. So let's suppose n would be the size of our string. As I mentioned, that we will be maintaining a left pointer and a right pointer. Then we would be maintaining an unordered map in which the outer loop will be running in from right pointer basically till n. And what my inner loop will do is, okay, let's come to inner loop later on. Let me first, like, let me go by step. So basically, in the unordered map we just need to um, input our characters, right? So I'm thinking in this way, like this could be some kind of approach which we are thinking. Let me check whether we got any users or not yet. I don't think so, but it is fine. Mm, how could we check whether, okay, this exists in this or not, this exists in this or not? Mm, okay. Let me think. Unordered map dot size, and we have to check whether, okay, like, does the left part is already there or not? How can we think about this? And this is a very tricky problem now. What if I do a dry run, like I will put A, B, and C, and we can keep checking this thing that whether this particular thing exists or not. Okay, let's suppose A, B, C, A. Now A existed. Now our task is to remove it, remove the characters from the left, unless and until we don't find it, right? So write and mp dot find s of I not equal to mp dot end. So what will happen until the time we are not receiving the current character, basically s of right, uh, we will keep decrementing the elements from the left. So mp s of left minus minus s minus minus, and if mp dot count of, or let's do mp of s of left is equal to 0, then we have to erase that element from the map. So s of left, so this will be handled. Now outside this loop, if I check, my task is to just simply go and add the elements again and again, again and again. Okay, what we can do is answer is equal to max of answer right minus left plus 1. Should we do it here? I'm thinking this way, that let's suppose if I so our task is to include A. Let me highlight this. Let me include A, B, then C. Then we encounter A and we check if, okay, let me do this here, then better. So what will happen, that we are keep incrementing this. Okay, so right will 0, 1,
Is it there? Is it there? No, it is not. Hmm. How can we solve this problem is that we're including A, then B, then C, hmm, then A. Let me think. Write it on a notebook then. Better. Hmm. A B C A B C B B. We have a left pointer. We have a right pointer. Okay. Now let's maintain something kind of map. I will include this. Right will go here. Include. हम्म अच्छा, अगर मैं इंक्लूड करता जाऊँ और मुझे जैसे ही मालूम पड़ता है कि यार जो मैंने करंट इंक्लूड किया है ना उसका काउंट एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो अब मेरा काम है डिक्रीमेंट करना फ्रॉम लेफ्ट, है ना। तो अब मान लेते हैं कि मैंने ए को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब मैंने डिक्रीमेंट करना, तो ये तो डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि भाई ये जो राइट अपन देख रहे थे क्या ये इसका काउंट ज़्यादा है। वो बोलेगा कि नहीं भाई काउंट तो एक है तो ये बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ जाएगा तो ओके, नहीं अभी जैसे 0 1 2 पे आ गया है क्या, नहीं है, तो फिर 2 - 1 वो भी उसने सेट करता रहा, ठीक है। जैसे आया तो अगेन उसको सेट कर दिया, तो इसको अपन करेंगे एम पी एस ऑफ राइट प्लस प्लस, ठीक है। अपन चेक करेंगे वाइल लेफ्ट टू राइट एंड एम पी डॉट काउंट ऑफ एस ऑफ राइट इज ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो अपना काम है कि इसको रिमूव करना लेफ्ट साइड से। एम पी ऑफ एस ऑफ लेफ्ट, तो इसमें लेफ्ट हो जाएगा हमारा प्लस प्लस, और इफ एम पी ऑफ एस ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू 0 तो एम पी डॉट इरेज एस ऑफ लेफ्ट, ठीक है। तो एम पी डॉट लेफ्ट हो गया। ना अगर ये एम पी डॉट लेफ्ट हो गया है तो यहाँ से बाहर आ जाएगा। अपना काम बच रहा है यहाँ पर कि मैंने तो इसको इंक्लूड कर लिया। नाउ आई हैव टू सेव दिस एज एन आंसर, तो आंसर माइनस आंसर डॉट राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 और राइट प्लस प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, अब थोड़ा कॉर्नर केसेस भी देखना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट हम लोग रन नहीं कर सकते। और रिटर्न करेंगे आंसर। आई थिंक मैंने आंसर को इनिशियलाइज नहीं किया, इसको कर देते हैं। अब सोचते हैं तो क्या होगा कि भाई ए बी सी है, तो भाई पहला ए आ जाएगा, ठीक है जी। ए आ गया, चेक करेगा कि भाई इसका काउंट ज़्यादा है क्या, वो बोलेगा नहीं यार नहीं है, तो वो बाहर के बाहर निकल के ही इसको 0 - 1 + 1 कर देगा स्टोर, ठीक है। ये आ जाएगा 1 पे। सेम इस पे आएगा, इसको एंटर बोलेगा इसे है क्या, बोलेगा नहीं है यार, तो 1 - 2 हो जाएगा, इसके लिए भी सेम 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ
इसको डालो, बोलेगा कि हाँ यार काउंट तो है, इसको निकालेगा, लेफ्ट आएगा यहाँ पे बी पे, ठीक है। ओके, एक चीज़ और गलती कर दी हमने, यहाँ पे इसको ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। तो वो देखेगा कि भाई जो लेफ्ट हमने हटाया है, क्या उसका काउंट 0 हो गया है, तो बोलेगा नहीं यार उसका काउंट तो 0 नहीं हुआ है। तो लेफ्ट को कर देते हैं प्लस प्लस, लेफ्ट इधर आ जाएगा। अब चेक करेगा दोबारा क्या बढ़ा है, हाँ क्या काउंट जो है वो बढ़ा है नहीं, तो वो करेगा 0 1 2 3, 3 - 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा बी पे कैलकुलेट करते हैं, तो बी पे आएगा 1। चलो रन करके देख लेते क्या होगा, पता पड़ जाएगा। ओके, तीनों ही केसेस में गलत आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? हम तो मैक्स सेव कर रहे हैं। आई थिंक ये गलती है। आई थिंक काउंट इज ओनली फॉर रिटर्निंग कि भाई यार वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ये 1 है, वो काउंट वैसा काउंट नहीं रखता कि यार ये है। स्टिल वी कैन सी दिस कि भाई सी प्लस में अनऑर्डर्ड मैप डॉट काउंट क्या करता है। अच्छा, ये सिर्फ चेक करता है कि भाई की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो अगर 0 आ रहा है तो मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करती, 1 आ रहा है तो मतलब कि एग्जिस्ट करती है, ठीक है। आई थिंक आई एम कॉन्फिडेंट विद दिस सोल्यूशन, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, ये तो एक्सेप्ट हो गया। तो यस, वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी कैन अंडरस्टैंड द इंट्यूशन वेल व्हाइल लुकिंग एट द कोड। सारे टेस्ट केसेस पास है। एक बार एडिटोरियल देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो रन टाइम है 49.56 है, तो आई थिंक इट कैन बी इम्प्रूव्ड। और हमने सवाल 15 मिनट्स में किया हुआ है, दैट इज़ गुड। एडिटोरियल तो नहीं है, कोई ऐसा अच्छा सोल्यूशन देख सकते हैं कि हम लोग। आई थिंक इन्होंने सेट्स का यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ गुड। सेट्स का यूज़ करके इन्होंने कैसे हैंडल किया है कि भाई काउंट अगर 0 है तो डाल दिया, और ये मेंटेन किया, काउंट जो है बड़ा हो जाता है तो उसको इरेज करते रहे जब तक काउंट 0 ना आ जाए, ठीक है यार, ये भी सही अप्रोच है। अनऑर्डर्ड मैप आई बिलीव मेरे जैसी अप्रोच है इसमें, ठीक है, दिस इज़ गुड। अच्छा, दे आर मेंटेनिंग दिस, ग्रेट, ठीक है। आई थिंक इंटीजर एरे से भी हम लोग कर सकते हैं। लेफ्ट इज इक्वल टू कैरेक्टर इंडेक्स, अच्छा अच्छा, ओके, इंडेक्स वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। आई मीन ओवरऑल गुड अप्रोचेस। So yeah, in this way we will be solving this sliding window kind of problem. So I think this was my live